Welcome everyone to When India's live session about Nari Shakti. We wish everyone a very happy Navaratri 2021. It's the first day of Navaratri and it's the day of goddess Shailputri. And suggested colors for today are yellow and orange. Goddess Shailputri is the first manifestation of goddess Durga. She holds a trishul in one hand and a lotus in the other hand and rides a bull called Nandi. Goddess Parvati was born as a daughter of Himalaya and Sanskriti. Shail means the mountain. Thus, she was known as Shailputri. And before we begin today's session, I will like to mention When India Awards 2021 are scheduled on 19th November 2021 and the registration for the same are closing soon. So if you have not applied yet, apply today. The link will be shared in the comment section. And back to today's session, Nari Shakti. Our guest today is Manju Mehra. If you are from Bangalore and if you are from Whitefield area in Bangalore, you definitely know Manju Mehra. She is a she's serving as a volunteer to Bangalore City Traffic Police, and she has been in the COVID team also. She's from Pune, married to a Punjabi but settled in Bangalore. Welcome, Manju. Namaste. Glad to have you. She was in. Thank you. Yeah, Please. please go on. Carry on. Okay, I will just trying to introduce a little and then I'll let you speak a little. Okay. So, she was in Chief Minister Task Force for COVID-19 first wave and burial, last right, unclaimed bodies, multiple things she has seen in this pandemic time. So, yes, Manju, what will you like to share with our viewers? There is a lot to share, and thank you for allowing me to be a guest over Our here. pleasure. Would you like to shoot some questions, or I just बस शुरू हो जाओ? मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ट्रैफिक पुलिस में आप कैसे सर्व करना आपने स्टार्ट किया? हाउ डिड यू स्टार्ट एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट? That was way back in 2003, 2004. बच्चे सड़क क्रॉस करते हुए दिखते थे, तो थोड़ा सा अजीब लगता था कि बच्चे काफी सारे एक्सीडेंट्स देखे. दैट्स वेयर माय हार्ट वेंट आउट और सोचा कि नहीं चलो और कुछ ना सही बच्चों को हेल्प करते. वो करते करते बस एक वो लत पड़ गई. तो आई एक्चुअली गॉट एडिक्टेड टू दैट and that gave me some sort of a joy. So I had a job which I quit and I got into this which gave me uh, a big pleasure, a nice wonderful smiley day, enjoying myself and being myself. So, did something like a traffic warden post existed at that time when you started? Yes, it did, but I didn't join Okay. it then. I joined it quite late, around 9-10 years ago. I ended up joining officially in uniform. Okay. But I was without uniform. मैं जो जितना जैसे कर सकती थी, I enjoyed myself then also and today also. Okay. So, how easy or how difficult it is to handle the Bangalore traffic, especially when all the offices are open and roads are full of vehicles? How do you manage that work pressure that to under this uh, all horns going on and honking of the vehicles? Actually, pressure होता है pressure cooker में. I don't think there is any pressure when you love to do something. Pressure feel नहीं होता है. And my first love is traffic. I romance the roads. I love Wow. the different mentality of the people. I don't see like कोई बंदा signal jump करके जा रहा है. So there could be n number of reasons to it, and I always see it in a different. I try to put myself
with a my so-called dumb brains में कुछ तो भी उसको, I mean, we see what we are seeing, but there are so many things which we don't see, though they are actually in front of our eyes. तो बस वो होते होते दिन निकल जाता है, ट्रैफिक एंजॉय होती है, एंड लाइक आप थोड़ा सा किसी को कुछ हेल्प कर दो, दैट स्मॉल स्माइल इन द आईज व्हाट यू सी, उससे बहुत अच्छा लगता है. Nice. So, what are your strength, Manju? Strength, I have never seen myself like, you know, having any particular strength or something, but I do count my weaknesses. I keep a track of my weaknesses. मेरे में जो खामियां हैं, my flaws, my shortcomings, and I just, you know, go over them and I try to overcome them. कि ये मेरे से नहीं होता करके I don't want to put myself set back. मैं उसको कैसे improve कर सकती हूँ? अगर वो वाली चीज मेरे से improve हुई, तो मैं दूसरी कुछ तो मैं ऐसे कुरेज के ढूंढने की कोशिश करती हूँ, wherein, you know, I can improve myself, I can do a bit better, I can be crazier, थोड़ा सा mental imbalance हो जाए, सोचते कि हाँ भाई ये वाला टास्क जो खुद को दिया है, how can I achieve it? Very nice. And if I ask that you have to tell something about yourself, what you will like to share with our viewers today? If you are seeing me as a very disciplined person or strict person, or, you know, someone who should not be मिलना नहीं चाहिए इनको वगैरह 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 types. Some people think that I am a hero, I am someone like, you know, one-stop solution for everything, help is there. But if I see myself, I have been a brat throughout, right from my childhood, been a backbencher. The real pain जो टीचर्स को होता है वो मैं थी. स्कूल बंक करना, टीचर के साथ शरारतें करना, टीचर के गाड़ी की सीट जाके फाड़ना, किसी के Oh my God. हाँ बबल गम जाके बालों को लगा के आना, किसी फ्रेंड को छेड़ा तो मारा पीटी करके आना, दांत तोड़ के आना. That was how I was. And I was into mountaineering, so that got discipline into me. All my instructors, they helped me see nature or Mother Earth in a different way. That connectivity, it slowly helped me to be a better person. पर अंदर ही अंदर वो जो ब्रैट वाला कीड़ा है वो अंदर से जागरूक होते रहता है. But it will help also ना, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वो वाला कीड़ा रहना चाहिए, वरना sometime it will become difficult. No. When you come over there with uniform or without uniform, when you get into that brat wala kida, it might end up into road rage. We are not there to fight or, you know, be strong or abusive or, you know, that would happen. If we approach the same thing in a understanding way, caring way, loving way, we learn, we help somebody learn. तो ये ब्रैट वाला कीड़ा यहाँ पे नहीं चलता है. अच्छा. That helps you to understand सामने वाले के दिमाग में कैसे खुरापते चल रही होगी. You are able to be in their shoe to understand what is going on. आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो आप शेयर करना चाहें कि रोड पे कोई ऐसा इंसिडेंट आपको ऐसा कोई याद है क्या? एक्सीडेंट के वाला या ऐसी मस्ती वाला? दोनों बता दीजिए, because both are related to your profession and you have seen multiple things you have seen. So yes, multiple things, many accidents, carried n number of accident victims to hospital. One I would like to tell, I was from the place where the accident happened, I was around 13 kilometers away, and the auto rickshaw driver happened to call and tell कि मैम यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है. मैं बोला मेरे मैप मेरे को आ रहा है 22 मिनट. बोला नहीं मैडम आप कुछ भी करके आ जाओ. I called up the station staff. They were on some side. Everybody decided to leave. I hopped on to a two-wheeler, got a lift, and two-wheeler वाले ने बड़ी Formula 1 two-wheeler चलाई. We reached the place. The lady had got head injuries.
Oh. And people were watching, clicking photographs. A lady Oh. lying down on the road without help. Hmm. God's grace, somehow we happened without an ambulance. We took her down to the hospital. She got very beautiful care in the hospital. Now she is back to her children. They should be around 13 and 9 years old now. They were Oh. 1 and 3 that time. Oh my God. Very young. So after So- that, I got one more family member. So, I mean- but I really think कि आजकल people just forget it. Once they have a mobile, they are more interested in clicking picture and sharing it on WhatsApp and other Yes. social media rather than helping the person who needs it first. पहले वो It's help more of करना like, चाहिए. and you want to put it on the social media कि हाँ भाई मैंने ये किया, हाँ. ये देखा, ये हुआ. हाँ, बस ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हमारे चैनल पे उस टाइप का थोड़ा सा फीलिंग आ जाता है लोगों के अंदर. जान की कीमत और value of life is quite something very rare what has happened, which we are forgetting and which we saw very, very, very closely in this COVID times. ट्रू. और अब अगर कुछ मजेदार वाला कोई किस्सा आपको याद हो बताने के लिए, मजेदार कुछ वाला ऐसा किस्सा इंटरेस्टिंग. है, most of the time I get addressed as sir. अच्छा. I get addressed that like you are looking very handsome today. Okay. बहुत बार ऐसा हुआ है कि people will come and put a hand on your shoulder or across your waist and sir करके, and then suddenly realize नहीं है भाई ये wrong number लगा है. that gives really hilarious moments कि अरे भाई that person is like trying to persuade you, trying to tell you something with इतना जोश में और वो एकदम से खुश हो जाता है. Those expressions are really awesome. So Manju, how were you in CM's COVID-19 team? Did you apply that you wanted to volunteer? I actually did apply. It was something which our major sir had taken the lead in it, and many people say that I did good things in it. It was always 100% plus teamwork. I accidentally got into it, and it was I myself, I was not sure of my capabilities, like I could do something, but my gurus or my mentors whom I would say, they had that कि नहीं ये हो सकता है, ये कर सकती है, it is possible, this is the task which needs to be done and it has to be done in this way. A total unknown team, unknown faces, unconnected people, and we all got together. We are losing your voice, Manju. I or she? Yeah. Yeah, I think I'm back. Yes. So you were telling about your experiences during COVID times. Yes. That was really a wonderful journey with wonderful teammates, wherein like every fraction of a second there was a learning experience. We couldn't relate one incident with the other, or could make something like a standard SOP or something. Every different challenge was different from the previous one, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड. तो घर में तो हम लोग रहते नहीं थे, घर है करके कभी याद आई तो घर में चले आते थे. तो it was like totally dedicated team, and with that dedicated team वो that strength, that automatic push we got, that automatic एक अंदर से एक strength जो मिल गई,
बस हम वी जस्ट एक दूसरे के साथ में बस हाँ ये करना है, ये करना है, ये अचीव करना है, बस ये आज इतने लोगों को खाना मिलना चाहिए, ये करना है, एंड वी गॉट इनटू इट. वाओ. तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं काफी टाइम से बिजनेस में हूँ, एंड आई हैड लॉट ऑफ कनेक्शंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. So what I tried from my behalf was what I tried in this COVID time is I used my WhatsApp status, what is there, to help people. And anybody from any part of India will message me that we need oxygen, we need this tablet, we need this injection. I'll put it on my WhatsApp status, and people were really helping. After being in Bangalore also, I was able to help people from Delhi and Gujarat and Calcutta, Kerala, Mumbai, I don't know what, lot many places. So I feel और मेरे साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही ऐसा कर रही थी. There were a lot of people who were also doing it. They will message me, आपका status देखा है, तो we are also posting on our status so we can get help. So I think वनिता जी, इसके पीछे का सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ. हाँ. We all are, whatever you say, caste or our upbringing or our religion or whatever, leaving all those things apart, and the normal A positive, AB positive, B negative, all those blood groups apart, humanity is in our nature. That is our religion, and in our blood runs the love for our motherland. Yes. For our nation. Absolutely. Yes. हम लोगों ने ये हम में से rather not only in Bangalore, I'll say pan India, rather pan globe. None of us have been restricted to a party or certain groups. There have been no restrictions. We all have been one in one blood with only one aim, to beat this COVID. And to a very good extent, we have got over it. A lot of people did whatever they can. They tried to help in whatever way they can. People have helped. So it was really nice. आपने सच बोला कि लोगों को मतलब वो humanitarian behavior जो है ना, they really felt it, and everybody was there for everyone. Wherever they can help, they were trying to help. Yes. So किसी एक के सर पे ये सहरा नहीं जा सकता कि मैंने ये किया या आपने ये किया. It was always a huge team. Everybody around. Yes. And many people, it's like when we go through the WhatsApp status, मेरा status किसने post करा, किसने help करा, ये पता भी नहीं चलता था. तो lot of people were unknown to us, but they were still helping. Yes. So that was a great thing. And social media का वो बहुत ही अच्छा benefit था इस समय कि हम लोग कहीं पर भी किसी से भी connect कर पा रहे थे. So जैसे आज हमारा टॉपिक नारी शक्ति है, so I will like to ask you कि being a female, were there any challenges that you faced in your career कि या कोई restriction आपको ऐसा लगा हो कि being a female it was a problem or something like that? No challenges, actually I think they are part and parcel of our life. उसको enjoy करते रहना है. And when these challenges come, मेरे अंदर ये that will, वो दृढ़ निश्चय कि मैं ये कर सकती हूँ, I can deliver it. My own abilities मुझे पता चलती है. I end up discovery of myself. तो जब तक challenges ना हो तब तक मजा नहीं आता है. और वो comfort से and you are in so much habit of challenges because every day Bangalore traffic is a challenge. So आपको इतना habit है challenge. And sometimes life comes with situation dressed as challenges, I would say. तो बस उसका मेकअप बदल दो, उसका पहनावा बदल दो, उसको देखने की तरफ थोड़ा सा अपना एंगल बदल दो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ. कीचड़ है तो कीचड़ में हाथ डालोगे तो गंदा तो होना ही है, पर धोने की भी व्यवस्था होती है. So how we look at it is what the challenge is. Otherwise, I don't think I face any challenge or hurdle. I have met you once only. I think 4 or 5 years back I have met you once, and I don't know how much you remember of it. I hardly met for an hour, and a lot of group of ladies were there together. But after that, मुझे जैसे ही पता चला था कि आप व्हाइट फील्ड के पास सैप लैब के बाद आपकी ड्यूटी होती है,
So whenever I used to cross that way, I used to search you, and I used to feel so happy to look at you. That okay, she is there, and it was never like I will go and meet you. But I was so happy to see you over there. Okay, wow, Manju is here only. I was very inspired by you that day also. So, what would you like to tell to our young women how to start work and how to be determined to continue it also? दिल में एक बार ठान ली है, गो बाय इट, शांति से बैठ के थिंक मोर कि इससे नेगेटिव क्या आ सकता है, रुकावटें क्या आ सकती है, लिख के रखिए किताब में वो क्या रुकावटें आएंगी, एंड वर्क ऑन दोस नेगेटिव थिंग्स, टर्न देम इनटू पॉजिटिव, गो अहेड, बी अनस्टॉपेबल, बस निकल पड़ो. उसके बाद दिमाग में ही लगाना है. एक बार वो गोल ये कर दिया, दिमाग में से टोटली एलिमिनेट कर दो ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि आपने नेगेटिव को ऑलरेडी पॉजिटिव कर दिया है. आई मीन कोरोना टाइम्स में नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत अलग होता है, बट व्हेन यू कुछ नया शुरू कर रहे हो, तो आप उसमें सब नेगेटिव वो जो आपके ऑब्स्टिकल्स है, यू जस्ट टर्न देम, आपको लिख के रखो, गो थ्रू इट, इसको मुझे ओवरकम करना है, ये मुझे दिस इज गोइंग टू, मुझे इज गोइंग टू पुल मी बैक, वर्क ऑन इट, राइट इट डाउन, रीरीड इट, यू विल फाइंड योर ओन सॉल्यूशन. So everybody can find a solution. Yes. And what do you think, are there any changes needed in the society to make it a better and safe place for women to go and work? नहीं, वो सब अपने दिमाग में की पूरी उपज होती है. If we see that कि चाय गर्म है फिर भी मैं उसको जाके हाथ लगा रही हूँ, तो चाय ठंडी तो होने वाली है नहीं, मुंह को एक चटका तो बैठने वाला है ही है. तो आप उसको कैसे देखते हो? एंड एंड ऑफ द डे यू नो वी हैव एवरीथिंग कम्स इन अ साइकिल. आज अगर खराब दिन चल रहा है तो वो सुधरते 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 फिर से अच्छे की तरफ आता ही है. So how I am in the society, how I am giving back to my family, to my neighbors, to my area where I live in. मैं अगर अच्छा रह रही हूँ तो इवेंचुअली अच्छा ही मेरे पास आएगा. तो अगर उसी को मैं देखते रहूं कि नहीं आप बुरा ही हो, अरे ये पॉट होल है, इसको गंदा ही है, इसके वजह से मेरा ये हो गया, उसका ये हो गया, उसमें मिर्च मसाला डाल के फिर मैं आगे 4 लोगों को बता रही हूँ, it's not going to help. What is going to help is I as a human being, I as a citizen of this particular area, I have done the choice of electing some representative. किसी को तो मैंने इलेक्ट किया, तो मैं अभी इलेक्ट्रिकल वो उसको जाके मैं गाली देने से अच्छा है मैं खुद में ये देखूं कि मैंने क्या देख के क्या सोच के मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है. If I am expecting something from somebody else, what is my contribution as a citizen towards my own safety, towards my own well-being? ताली एक हाथ से तो बजने नहीं वाली है. That's how I look at this. So I am so happy to have you on the first day of Navratri, and such a nice way to begin our session of Nari Shakti. And we will be having 9 days continuously talk with the ladies. And it's very nice that we were able to get your time and our time matching, and then you were able to join us. नहीं, मैं सेजल को ना नहीं कर पाई. So good that you were not able to say no. So, is there any woman who inspire you? There are many women and men who inspire me equally. Okay. I don't see, because if I say मेरे पिताजी, मेरी माँ जब स्कूल जाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, सुबह 4 बजे घर से जाती थी, शाम को 5-6 बजे she used to come back. She was a government school teacher. So it was my father who played the role of a mother. Right, हमारे डब्बे बनाना, छोटियां बनाना, स्कूल, होमवर्क, नहाना धोना, सब कुछ.
So I don't see a woman or as a gender woman, as a woman. There are so many मेरे बहुत सारे गुरु है जो मुझे पिता के तौर पे भी देखते हैं, माँ के तौर पे भी देखते हैं. So there is like, where you find the inspiration. It necessarily need not be a woman in particular. मेरी बेटी वो एक आते जाते मेरे को पिन मारते रहती है, मेरे को she keeps on pushing me. So it's very difficult that who can inspire you. Sometimes you see I don't mean to demean anyone, पर सड़क पे कोई एक औरत अपना काम कर रही है, कूड़ा कचरा उठा रही है. Even she doesn't fail to inspire me. She ignites that thought in me कि यार मैं कचरा डालती हूँ, छोटा सा ही सही, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, पर डाल देती हूँ. I am not perfect. I don't think nobody can ever be 100% perfect. Absolutely. तो वो जब अपनी शिद्दत से अपना काम कर सकती है, why can't I improve myself to a certain extent? When I see some very inspiring police officers, the amount of dedication and discipline and the type of work they do, the inspiration के भंडार है हमारे आजू बाजू में. It's that like हम किसको देखते हैं, किनसे सीखते हैं, उसमें से क्या qualities उठा के हमारे, because like every individual is different. So that how I see it and how I put it into my head, my mind, it should reach down somewhere deep to the soul. ऊपर ही ऊपर हाँ, this lady inspires me, that person inspires me, वो ऐसे लिखने तक that is okay. But otherwise, like in real life, when you see around, everybody will have some or the other quality to inspire. Yes, yeah. And they keep on changing. You keep on learning, keep on moving. So the inspiration sources keep on adding. The acceptance should be in you that you want to learn something. Then there are plenty of people who will inspire you. Yes. So Manju, I understand you are in traffic police, and like we say, even the doctors and the police, they don't have any particular job hours. Anytime randomly you can be called for the help. So how do you manage your job and your family? I am a volunteer actually for Bangalore City Police. So it's like your passion calls. Okay. How much you feel your involvement towards a particular thing. Let it be cooking or like घर में आज dusting करना है, ऊपर से करना है, deep cleaning करना है, या you want it's in the COVID times आपको mortuary में जाना है. So what you want to do? How much you want to put yourself into it? Okay. And how difficult was it कि at COVID times आप घर नहीं आ पाते होंगे? Because of the safety issue of the कि आप infection carry ना करके आ जाएं. So that would have been a challenge. नहाना, sanitizer बस sanitizer के sprays लगाना, कपड़े बदलना, like before, like just while entering into the house only, वहीं पे undress होके एक bucket में कपड़े डालना, bathroom में भागना, नहाना धोना, फिर hi hello बच्चे से मिलना. It was challenging times but very necessary. And आदत हो गई पहले खुद को, like कि यार this is like irritating, नहीं चाहिए, नहीं करना है, मैं कल से बाहर नहीं जाऊंगी, बहुत 3-3 4-4 बार नहा रही हूँ, सर्दी हो रही है, ये वो. And I used to have all those reasons. But फिर सुबह होने का इंतजार में पूरी रात नींद नहीं आती थी कि कब सुबह हो रही है, मैं कब बाहर निकल रही हूँ. So you never felt कि आपको भी infection के chances हैं? Like a lot of people didn't step out only, and you were there going out in the field only. Not you, like a lot of many people of us. who were Not everyone like डर के बैठे. अभी मैं तड़का लगा रही हूँ तो हाथ पे थोड़ा सा तेल का छींटा तो उड़ना ही है. Nobody can be 100% immune. और आप करोगे इसलिए मैं बस देखते बैठूं कि हाँ वनिता आएगी, अभी कर जाएगी, हाँ अभी आ रही है. हाथ पे हाथ धरे बैठ के नहीं होता है.
आई हैव दैट कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ. My seniors and my mentors, they believe that I could do it. बस निकल चले हम. So आपसे बात करके मुझे इतना समझ में आया that ladies or anybody who is watching us, they can understand there is if you are thinking of your strength, you should better think like Manju said, instead of thinking of your strength, think of your weakness and try to recover from that weakness, try to improvise your weakness, कैसे उसको cover up करना है वो देखना है हमको. एंड मंजू इतनी पॉजिटिव हैं, हर चीज को इतनी इजीली, जितनी भी मैं नेगेटिव क्वेश्चंस भी पूछ रही हूँ वो उनको पॉजिटिव ही करके आंसर कर लेती है. So everything she has made positive कि how you can do the things and understand the situations positively. इसके अलावा आप कोई और मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी? Just be yourself. Don't be cautious कि ये क्या कहेंगे, ये किया तो वो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा. बस हिम्मत करो. अच्छे इरादे से अगर कुछ आप करने निकल रहे हो तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा. थोड़े से प्रॉब्लम आओगे, 2-3 बार लड़खड़ाओगे, गिरोगे, चोट लगेगी. वो चोट जो लगेगी, जो वो फेलियर आपका होगा, तो फिर से जब आप उठ के खड़े होंगे, दैट फेलियर विल बी एन एक्सपीरियंस विथ यू. दैट एक्सपीरियंस विल बी योर ट्रेजर कि आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे. कोई दूसरा आके सेम थिंग उसी लाइन पे चल रहा है तो उसके पास वो फेलियर का एक्सपीरियंस नहीं है. जो मेरे पास है, क्योंकि मैं फेल हुई थी, आई एम एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस्ड. तो बस निकल चलो आगे. रास्ता बहुत हमेशा ही अच्छा है. जस्ट एंजॉय योर लाइफ, गिव बैक वॉट एवर बेस्ट यू कैन टू द सोसाइटी, टू आवर नेबरहुड व्हाट वी लिव इन. शायद कुछ होते हैं पिछले जन्म के कर्म होते हैं, कुछ इस जन्म के हैं. बस करते चलो, बढ़ते चलो, खुशियां बांटो. दो स्मॉल स्माइल्स, दो स्मॉल थिंग्स, साथ में चलो. नेगेटिविटी को भी मस्त अपना ट्रेजर करके मस्त पोटली में बांध के पूरा मस्त सिटी मारते निकल चलो. Because negativity is still part of life. Yes, we can't leave it. वो होनी भी चाहिए. वो जितनी ज्यादा हो उतना अपने स्ट्रेंथ बढ़ेंगे. क्योंकि when we see कि ये नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता. When we chart it down properly, we come to know कि नहीं भाई, ये नेगेटिविटी थी ही नहीं, तो फिर नेगेटिविटी ढूंढो, उसको लाओ अपने पास, उसको कन्वर्ट करो, अपना खजाना खुद बढ़ाओ. और इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी, कोई आपके पास से लूट के भी नहीं ले जाएगा, कहीं पे ट्रैफिक जैम भी नहीं लगेगा. आपके ऊपर है आप कितना उसके उस तरफ जाना चाह रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. that has to come from inside, from your heart. रूल्स और आपको चलान भरना है, ये वो सब सुपरफिशियल हुआ. अगर वो चेंज हम अंदर अपने आप अगर ला सके तो you don't need a traffic police or no type of policing at all. I can be the police for myself. Yeah, I think that is pretty odd कि हम लोग को अगर हेलमेट लगाते हैं ड्राइव करते हुए तो वो हमारी खुद की सेफ्टी होती है, लेकिन अगर हम हेलमेट नहीं लगाते हैं तो हमको पुलिस उसके लिए फाइन कर रही होती है. मतलब वी डोंट केयर अबाउट आवर हेल्थ एंड आवर सेफ्टी, बट पुलिस हैज टू डू इट. आपका मेकअप और ये सब उसको पूरा देख सकती हूँ. तो अपने हेलमेट और अपनी जान है भाई, वो तो ना कहीं ना किराए से ली है, ना मैंने किसी को उधार देनी है, तो वो मेरी खुद की है. उससे ज्यादा कोई वैल्यूएबल लाइफ पे हो ही नहीं सकता. करेक्ट. मतलब एटलीस्ट इट इज नॉट पुलिस's job to tell you that helmet is needed for your own life. That has to be self responsibility, self awareness. और स्कूल में भी देखो, आपने बहुत बार डंडे खाए होंगे पढ़ाई करने के टाइम पे, पर आपने डंडे कितने खाए थे, यहाँ पे नकल के ऊपर रूलर कितने बार पड़ा था वो याद होगा, पर किस बात पे पड़ा था वो नहीं याद होगा. पुलिस वाले भी आपको अगर डंडा मार के बताएंगे कि हेलमेट डालो, सीट बेल्ट डालो, डंडा मारा हुआ याद रहेगा. किसी ने 2 गाली दी वो याद रहेगी, पर गाली क्यों दी, डंडा क्यों मारा वो याद नहीं रहेगा. दो इट इज नॉट राइट कि डंडा मारो या गाली दो. आई अंडरस्टैंड.
If I see myself in the school times, बहुत टीचर से मार खाई है, पर क्यों खाई है याद नहीं है. टीचर याद है जिसने मेरे को 2 लगाए हैं. हाँ, टीचर्स याद रहती हैं. टीचर याद है, पर क्या मस्ती की थी, क्या किया था, वो याद नहीं है. So as Manju said, you have to be your own police. You have to discipline yourself. You have to take care of yourself. And as she said, if something is going very smooth, it's fine. But if something is wrong, try to understand why it is wrong and try to correct it and move on with it. Be unstoppable, as she said. Thank you so much, Manju, for joining us today. Thank you. We wish everyone again a very happy Navratri. We will be back tomorrow at 4 o'clock. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye.